So this side RP Bhardwaj from Srinagar Study Circle. I welcome you in the capacity of convener of this study circle. Both our learned speaker for today have already joined. Today we are going to have two very important sessions. The first one is to be taken up by Pushpendra Singh ji. It is a technical session. He will discuss some important issues related to blockchain and the working like this. And the second topic will be taxation of cryptocurrency in India. Thank you, RP Bhardwaj ji. So our speaker for today's session, Pushpendra Singh ji, he is with us for the first time. He is a founder of smartviewai.com, which focuses on decentralized finance awareness and blockchain application and their respective markets. So he comes from the world of IT and he understands and is very much familiar with the importance of blockchain technology. He has over 10 years of software development experience in industries ranging from supply chain management, centralized finance system, and cryptocurrency market. Besides this, he enjoys making blockchain awareness YouTube live videos in Hindi. I have watched some of his videos. They are really excellent. And his YouTube channel has millions of views on a monthly basis. So with this, we invite our first speaker for the session, Pushpendra Singh ji, to guide us on blockchain and cryptocurrency. Our second session will be taken by CAGaurav Garg ji, who is a member NIRC, and we congratulate. For the second time, he will be taking up the taxation issues. But first of all, we'll start with Pushpendra Singh ji. Pushpendra Singh ji, it's all yours now. Thank you, RK Gupta sir, for lovely introduction, and thanks all hosts and all the speakers. So let my introduction already done. So now I will move forward to blockchain PPT, and as well as I will talk about crypto. But I will more focus on the tech side, because the this is a trend right now. We talk about like a market price and like a just investment and all those things, but I will first focus on the like a tech side and importance of blockchain. Then after that I will also talk about like some cryptocurrency part, like how to invest or like a past growth, past performance and all those things. So that will make a session more interesting, because whenever like I deliver like a blockchain session, so till the like a blockchain session, the everyone is feel like a bore, because I'm talking about technology. But whenever I move to about the like a price and like a past performance, so that time session is like a more interesting. So yeah, first of all, I would like to introduce like about the blockchain, how it will work. So what is blockchain? First of all, we need to understand what is blockchain. So a blockchain is a digital decentralized public ledger. That ledger is distributed in the sense like for example, if I talk about the banking system, or if I talk about the any like a central authority system, that is like a there we are storing the data in the one location. But in the distributed technology, just like a blockchain, here we are storing the data in the multiple locations in the multiple like a nodes. So that I will explain in detail. So blockchain is just like a chain of blocks. For example, so here I'm seeing all our CA. So generally in the like a whatever the record we key in on the Excel, that is store the form of tables, form of like a in the table format, like a cells, there are like a rows. So that is like a we are doing the central like a centralized entry. But in case of a block, so there we are storing data in the form of like a blocks. So each block is connected with each other, and like this is like a first block and this is second block, and the all block will be connected. So let's say if one block is broken or one block is hacked, the entire blockchain will sink, and that cannot be a temper. So that I will explain on the like upcoming slides. So a blockchain keeps a record of all data exchange. The provide is a referred to as a ledger. So it's just like a digital ledger. So now let me go to like a blockchain history. So blockchain was invented by Satoshi Nakamoto in 2008 to serve as the public transaction ledger
of the cryptocurrency, just like a Bitcoin. I hope everyone have heard about the Bitcoin, because right now it's in very mainstream media, because nowadays in the cricket, Big Boss, or different, so we are seeing the ad, buy 100 rupees Bitcoin, buy 200 rupees Bitcoin. So Bitcoin is right now very popular also in India. So the concept of distributed computing has been around since 1990. So that time that blockchain was not there, but distributed system was there. So distributed is the system is just like we are dividing our server hosting like in multiple places. So that is just a distributed system. So after that, in the 2011, 2012, this cryptocurrency, and in the 2009, Satoshi Nakamoto created a Bitcoin and introduced the concept of blockchain. Now in 1919, the distributed ledger come, but in the 2009, this Bitcoin come. So Bitcoin, behind the Bitcoin, the technology is blockchain. So this technology is very powerful. So mostly people are aware because of about this technology, because of Bitcoin, because of Ethereum, because of BNB coin, because of different coins. And after that, in 2011, 2012, the cryptocurrency, that time in the 2009 it's already developed, and 2011 it's a tradable. So let's say with the help of a Bitcoin, you can buy some services. Sometime one person paid 10,000 Bitcoin for buying a single pizza. So this pizza story is very popular. If you will Google it, you will find it, because right now Bitcoin price is around 30 lakhs, and he had paid 10,000 Bitcoin for one single pizza. So that story very popular. In 2012 and 2013, so Bitcoin used for transfer, a digital payments and currency transfer. And after that, 2013, 2014, financial market and application using blockchain technology, because in the 4 years, many hackers try to break this technology, and many hackers try to understand this technology. अभी तो हम दिल्ली दिल्ली करी जा रहे हैं भैया, हरियाणा पड़ा है, पूरा राजस्थान पड़ा है, सोनीपत। Hello. Please continue. Okay, I think someone talking. So if any questions. Yes. नहीं कुछ नहीं सर, वो अपने आप बात कर रहे थे. I muted him. हाँ जी. Okay. Okay, no problem. So basically in the 2013, 2014 financial market, a application, there are multiple application, they are using the blockchain. In fact, this the COVID certificates also deployed on the blockchain, supply management also in the blockchain, and there are a multiple smart contract launch in the 2014, 2015 for making the just this one insurance sector deploy on the smart contract. So in the 2015, 2014, this technology widely used in the other application as well as except the Bitcoin and cryptocurrency and all those things. So in 2015, 2016, there a permission blockchain network solution came, and after that 2018, a big exchange and big FOMO in 2018 created, as well as in the, as you know, that in 2017 there is a demonetization also happened in India. So that time many people buy that time Bitcoin as well as. So now let me move to another slide. So in the 2008, again the idea was published, and 2009 the first Bitcoin network started, and 2010 first cryptocurrency launch, and 2011 one Bitcoin price was equal to a $1 US, and 2009 it was a 6 rupees INR. So that was just our Parle-G biscuit cost, and right now it's at 30 lakhs. So you can see the a price performance in 10 years. And in 2013 one Bitcoin equal to 100 USD. So in 2014, 2015 I made also a lot of videos about mining, and also how to trade the Bitcoin. In 2014 the Bitcoin become a very popular because of Microsoft said, okay, now you can pay license fee in the Bitcoin. Now you can buy our software, our Windows, our solution in the Bitcoin. You can pay as so first it's used just like a payment gateway. So after that more people adapt it, and more people use this one. And in the 2017 one Bitcoin equal to around 10,000 USD, and India it was I think
मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूँ ना सर, मैं जा रहा हूँ मेरे So in 2018 and 2019, again the price was down, and in the last year, so Elon Musk enter also in the cryptocurrency, and Elon Musk created like a very big hype, and he has like a Dogecoin and other coins, and as well as big company just like a Tesla, they are accepting or holding the Bitcoin, as well as big player just like a MicroStrategy company, they are also buying the Bitcoin, and they have around like 100K plus Bitcoin right now. They are holding since a long time. So just this is the like a block. Bitcoin is the one of the use cases of the blockchain. Means first Bitcoin built on the blockchain technology. So a blockchain is a growing list of data blocks that are linked together. So here we have one example. So see, this is first block, and okay, let me use highlighter if I can use drawing tool. Yeah, okay. So this is first block, and this is second block, and this is a third block. So for example, we have stored any information in this block. So after that, once this block will full, so there will be a new another block, and this block will be linked to this particular block. So and after that, once this block fill, then this block will link to new blocks. So it's a completely chain. So you can see this is here we are making like a chain, like a blockchain. So this is blockchain. So now if one person will try to tamper this information, for example, if I am trying to tamper this information, this block, so this entire chain will break, and tamper cannot be possible. So this is the beauty of this technology. So now let me move on the another slide. So the agenda of this particular blockchain technology, let me remove the drawing. Result. Cutting the middleman. For example, right now we are going to we are like a depositing for deposit money, we are going to bank, and their bank we are using as a middleman. So like if I want to pay you something, or you want to pay me something, we have to use the banking channel. So banking is a here like a middleman, or we are using third party any institution. So the blockchain aim to cut the middleman. So there like a we can directly transfer like a one to many or many to one. So there will not be any middleman. There will not be any mediator. So this is like a this chain is completely like a decentralized. So I will go through the decentralized definition in more detail. So characteristic of digital ledger. So let me go to like about the blockchain in more detail, like a why blockchain and how it will be secure, because I'm telling like a we are cutting the middleman. So it's a distributed. So distributed in the sense all network participants have a full copy of the ledger. For example, in banking, let's say I'm using my account, so there will be a central entry, and that will be in particular one bank and on the central server. But if I talk about distributed, so let's say we have one ledger, and that ledger will be synced with the entire network. So right now we have for example 10 million users in Bitcoin. So this particular copy, this particular ledger will sync to 10 million users. And now second part is anonymous. So generally I hope you have heard like a government saying that cannot transaction cannot be tracked. This is using but crypto is using in the illegal activities and all. So crypto is 100% decentralized, and that's why like no one can track it, because there we have in the bank we are doing the KYC, and we are like they are asking for like a Aadhaar card and all the proof and address proof and PAN card. So they, if let's say if something happen wrong, they can track. But in the decentralized world, there is like a we have only the one address, like a, or that address is like a encrypted address. So it will be something like XE21, like a one string. So with the help of string, no one can like identify anyone. So right now we have like a multiple centralized exchange.
So exchanges asking for the KYC, and they are linking the user wallet through the KYC. So now the main why blockchain is very important. So this is immutable. Immutable means whenever we will enter any data, that data cannot be delete, erase, change, alter. Means if one transaction happen, let's say I have sent you one money, I have sent you some Bitcoin, and after that if I want a revert back, so that cannot be possible in the blockchain network. If one record enter, then no one can tamper that one. So this is the a immutable. And if I talk about the secure, so all information is encrypted. So we will see only the some code, some string that is encrypted, non-human readable form. So only once the for every wallet user have their own private key. So if you have private key, you can decrypt that information and make as a readable, but others can only just see this transaction as a encrypted form. So no one can take an idea what is inside this particular block. Okay, so now let me go to another slide. So, it is all time. So now let's talk about some blockchain network. And so you can see here one example. So let's say this person or this node, you can say in technical term. So this is connected with everyone. Like you see this thinking here as well is here. So it's doing the fully sync. So let's say this is the A person, or A person have done some alteration in the data. So once this blockchain will sync, this all data will be synced, because 99 have same data or 90% have same data and 1% have different data. So in this case it will automatically sync, so alter cannot be possible. So because it's a working like a chain. Okay, so now let me give so here we have one example, centralized database versus blockchain. So in the centralized, you can see there we have a database, and you can take here one example of the banks. So bank have our database, and they are all entry like a debit, credit, and all those entry. And where we have a user agreement term of use, and then we have client. So every client have account, and that all information inside the available on this particular database. All information available on this database. But in case of blockchain, so every person connected and every person have own database, and that data this own database in the sense means this particular person have a full access of the blockchain network, complete network. So every person will be here on the sync, and this is called distributed. So this is how the blockchain work. So now let me move to another slide. So this is centralized. In the centralized, we are connected with with single server, but in case of decentralized, we are connecting like this. But in case of distribute, so we all are connected. So this is how blockchain network work, and that's why we say the blockchain network cannot be hacked, blockchain network cannot be temper. So for in case of a transaction, for example, A want to send money to B. So what will happen in this case? So first A will initiate the transaction. The transaction is represented online as a block. So this transaction will go to one block. The block is a broadcast to every party in the network. So in the network, let's say 1 million user. So this transaction will available to 1 million user, and those in the network approve the transaction is valid. So now here is the another game. So whenever we do any transaction, there we have also miners. So miners are like a person who solve the mathematical problems, or they are not solving the, by doing the any calculation. They have like a very
big hardwares with the graphics card on big ASIC mining chips, so that chips solve automatically that particular block problem to verify transaction, whether this transaction is correct or like this transaction have like any issue or something. So that verify with the help of miners. So here I have also brief idea about a mining. Okay, let me do. So mining is a process by which we verify blockchain transaction and generate a new block. So as I said, like a one block will full, then we will move to next block and then next block. So and then it will be a chain. So this is how the mining process work. So in mining process, we verify the block and we verify the transaction, and based on that we get certain reward as well. So I hope you have heard like somewhere, oh, he's doing the mining and he's making money through the computer and he has like a some hardware. So they are making money, they are getting the rewards. So the reward is itself in the crypto, in Bitcoin. And there are like a multiple type of mining, GPU mining or CPU mining. So in GPU, like a sum of coin, just like Ethereum, and some of coin like a, you can say Bitcoin, that can be mined through the mining process. So hardware is something like this. So this is GPU mining hardware and this is CPU mining hardware. So we have also ASIC miner. So ASIC miners work like this, means the shape is like this. But this, if I talk about GPU, it's a simple motherboard and CPU and graphics card. So this graphics card also used in the video editing and all those stuff. But the ASIC miner is a special, especially for the Bitcoin mining. And now let me talk about some of use cases, like a uses transfer. So for example, if we want to transfer any encrypted information from one person to another person, or let me give you a very simple example. Right now I'm in Malaysia, and if I want to transfer you some money, so I have only one solution. I can go to my bank, or I can log in into my bank, and then after that I can do some like a transaction. And for this international transaction, so it will take like around sometime 1 day, sometime 2 days, and depending on the bank, the flow will be something like this. From this country to, first it will go to like a main branch, and then after that, like sometime it take 1-2 days in international payment. But if I will do this transaction through the, and as well as fee or also very high, but if I will do this transaction through the blockchain technology, or Bitcoin or Ethereum or any coin, so it can be like a my transaction can be successful within 10 minutes, 1 to 10 minutes, or maximum 20 minutes. And there will be a guarantee, 100% guarantee this transaction will complete, because as I said, in the blockchain, right, this is immutable. Once you have initiated, doesn't matter you have clicked on the wrong, this transaction will complete. This transaction cannot be failed. So you will receive money within 10 minutes, and we can send money to anywhere in the world, and without taking care of the like the country banking system or banking channel, without going through like a middleman. We can directly do the transaction from one country to another country. So this is one of the use cases, and many banks also using this particular network, not currency, but they are using blockchain network to faster transactions. And there are like other use cases as well. So I hope you have heard about like a agriculture, because our PM said many times like a blockchain can be used to like a voting system. Blockchain can be used in agriculture to transform this one. So in agriculture and other like equity, private market debt, or wherever we need transparency, there we can use the blockchain. So blockchain is like a blockchain can build the trust, because everyone can see. In case of like a voting, so in the US, like a 2-3 days gone in the counting. In fact, yeah, one week. So they are counting like a who is the winner, who won this election. But in case of blockchain technology, it can be count in real time, as well as it can be like a transparent, because everyone can see, and it can be also anonymous, because blockchain have only the string code. So some of also code is like a
smart contract, the sharing economy, and crowdfunding, governance, supply chain. So supply chain is something like a, let's say we have some product, and that product will go to distributor, then it will go to like a small distributor, and then retail, and then after that it will go to a normal shop. So something like the supply chain work like this, and in the middle, in between also we have like agents and all. So their tracking is very difficult, but with the help of blockchain network, it can be tracked very fast. And file storage, let's say if you want to store any file in decentralized manner, so this is possible with the help of blockchain. And recently, Twitter has also implemented the NFT. I will go through that part also. Some of benefit, low transaction fee, because here we are not using multiple person, multiple government entity, so the transaction will be fast, and there will not be any like a very major fee. It's a like a, if you are transferring even 10 million, then your transaction charges will be also $1, $2 max. No chargeback, and 55% of small bank business do not accept credit cards. So in that case, this technology can help. And there are like a multiple, you can email also money, because right now there are multiple websites they are providing, they can encrypt your public key to your email. So with the help of this one, we can directly transfer the money. So there are certain risks as well, because lost keys, because if you have lost the key in decentralized exchange, I'm talking about decentralized exchange. Centralized exchange just like Vajrax, DCX, and Binance. So they are centralized. In centralized, they have like a one common key, and they are managing multiple account. But in case of decentralized, if your one time your key lost, then everything gone. And sometime regulatory issue as well, exchange collapse also issue, and some of time you can say terrorist activity, because of this, like a in some like in the last 3 years ago, 4 years ago, there was like a ransomware and some virus, and that time the all money they ask on the Bitcoin, because in Bitcoin they cannot be tracked very easily. So what are the possibilities? So the in the future, the Satoshi Nakamoto vision was this one. This paper currency can be like a reduced, and banking system can be like a enhanced, and we cannot say end of banks, because end cannot be possible. So here is one more example of the centralized and distributed ledger, because this one I have already explained, so let me ignore this one. So there are some challenges as well, because in many country, like we have like a energy consumption issue, and they are like because mining take like a lot of electricity, and they are like it can also create a problem for like a health, because there are like certain noise, and as well as electricity consumption is very high. And money laundering, and because in the money laundering, for example, I'm right now in Malaysia, and if I will use the banking system, and with the help of banking system, if I am transferring 1 lakh rupees or 5 lakh rupees, so my bank may ask like a what is the source of this income. But if I will transfer through the crypto, so there is no tracking at all. But whenever I will withdraw in Indian exchange, so that time it can be tracked, but still there are like there can be a possible there might be a possibility for money laundering. So what is cryptocurrency? Now let's talk about the cryptocurrency. So far, if you have any questions related to blockchain, so you may ask, you can ask, and then I will go through the cryptocurrency part, because blockchain part is now almost done. Should I go ahead? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आप क्रिप्टो करेंसी पे चलिए। हाँ जी। So basically, what is cryptocurrency? Cryptocurrency is electronic money or virtual currency, or you can say online cash. So Bitcoin is one of the biggest successful representation of the cryptocurrency. So Bitcoin, I had already explained, the Bitcoin started in the 2009, and that time Satoshi Nakamoto invented this for like for beating the inflation, and like for limited the supply
because right now government is printing money whenever like they are like they have need, and because of this inflation is rising. But Bitcoin have like a very limited supply, 21 million. So in the in the whole life, there will be only 21 million Bitcoin, and many people also lost the password and lost the private key. So I think maximum there will be in the full world 17 million Bitcoin. So Bitcoin has no central authority, and it's just like a you can say virtual currency and a paper currency. And in the 21 million, I think we have 1.5 million Bitcoin is remaining for mining, and that will come in 2000. I think it's like around 20, it will take around 20 more years. And for legality part, if I talk about, so there like a multiple country. So here the color wise, green color. So here like in the green color, which territory is showing, which country is showing, are they have like a regulation, or they are allowing. Yes, for example, in India. So in India, the cryptocurrency is not legal tender. Legal tender in the sense, like we cannot buy anything with the help of like a cryptocurrency, but we can trade, we can hold, and we can sell by as well. Because there is no restriction right now, you cannot buy cryptocurrency in India, or you cannot sell cryptocurrency in India, or you cannot trade, because there is no such law. So, and the same like some of country like a China, and they have like a restriction right now, because they had banned last year. So there we cannot like a trade. Some of countries here on the green one, that is their legal tender, and in the red one they're like a ban. So and now let's talk about the price. So in 2009, the Bitcoin price was like a 6 rupees, 6 rupees for one Bitcoin. And it's like you can say that time I eat 5 rupees Parle-G, and that time I could invest on the Bitcoin, so I could be a millionaire. So after that, you can see in the till 2017, there is not much price rise. But after 2017, the here you can see the Bitcoin price was $18,000. And after that we saw like a one correction, because this is very volatile, because as I said, this is a virtual currency. In virtual, like a if some announcement from like a Indian government or some any other government, so that time the price is fluctuating very fast, because it's in the share market. It's a 2% correction or 3% correction, it's a big mainstream news. But in crypto, like a 10%, 20%, 50% is a normal. Like a 30% dump is very normal. If I talk about like a altcoin, so there like a one altcoin is sometime increasing like a 500%, 200% in the within 2 hours, within 3 hours, and sometimes it's also dump like that. So here in the 2018, the price was very bad, continued dumping. In the 2018 December, also same situation. And after that, recently in the 4 months ago, we have seen the all-time high. So all-time high was like a $69,000. So this is how like a price performance work on the Bitcoin, and now it's again dump. So now you can see here clearly. So it's again dump. However, this is not 2022 chart, but right now the if I compare with like from all-time high, right now it's a 50% dump, more than 50% dump. So you can say this is also like a good opportunity for new investor, and but this is like a not financial advice, and cryptocurrency is subject to market risk. There can be a profit, there can be a loss. So just I'm giving a normal disclaimer. Okay, so now apart from this one Bitcoin, so after that Bitcoin, like there are a lot of coins came, and like other than Bitcoin, all are altcoin. So Bitcoin is just like a major coin, and we say king of like a cryptocurrency. And other than Bitcoin are altcoin, alternative coin. In alternative coin, there is like a Ethereum, and Ethereum also started from $5, $1, and then it like a $5, $10, and right now it's the price also half. And there are like a ADA, XRP,
and BNB, KCS. There are like a more than 6,000 plus cryptocurrency in the market, and around 10,000 cryptocurrencies listed on the CoinMarketCap. So CoinMarketCap is the one site where like we can see the past performance, we can see like a liquidation price, 1 month's low, 1 month's high, 4 hours low, 4 hours high. We can track all those activity. So CoinMarketCap cap is just like a index. So where we can see like all listings, all exchange listing volume we can track there. So this is how like this one work. And we have also ATMs in the like a worldwide in the many country. In fact, in India also last time one of my known installed the ATM, but due to regulatory issue and the ATM could not work. So in the Thailand, in the Singapore and Canada, many country have like a Bitcoin ATM. We can directly scan the QR code and we can like take out the money. As well as in India, like we have a certain exchange like a Vajrax, CoinDCX, JetPay, Unocoin. So they are providing buy sell feature. So with as well as trade, there we can buy Bitcoin, we can sell Bitcoin, we can trade Bitcoin, we can hold Bitcoin, we can stake also Bitcoin. So now let's me talk about like some more future about the Web3. So in future, what is going to happen? Web3 is basically a version of Web2, the next version of Web2. So Web2 is just like a Facebook. In the Facebook, just we are doing the interaction, like we are able to chat, we are able to communicate, we are able to video call, and all those things we are able to do. First time when Web1 launch, that time I have that one also in next slide. Let me. Okay, so I will go with this example. So in the Web1, like if someone has posted like some news, we can only read. We had option only that time for read, like some news post, some like a update post, or some any information, any valuable information available in internet. We were able to only read in case of Web1. So this is I'm talking about like in 1995, 1998. In that time only we had only read option, and after that this option come like you can interact with web, like in the Facebook, YouTube, or different, or like you can say right now we are doing the interaction with the help of Web2. In Web2, like a Facebook, Twitter, and there are like a lot of social media platform where we can read and as well as we can write. But in case of Web3, so this is upcoming future where will be like we have access of read, we have access of write, and we have access of also execute. Means, for example, right now if we are like using the Facebook, that time we are giving our full name, email, mobile number, date of birth, and all other information. And Facebook is using that information, and they are showing the ads based on the that particular based on the our past search, past preference, and based on the our age. So they are showing our ads, and they are using our data, and they are also selling that particular data, and they are also manipulating based on their data. In the US election, you have heard about like a same thing. So now in the Web3, we will log in through our wallet, our Bitcoin wallet, you can say, or MetaMask wallet. So that wallet have only the encrypted information, so they cannot read our information, and we can directly interact with the help of our address. So this is the future of like a Web3. In Web3, let's say if right now in internet, if you are searching, for example, flight, so once your search will end, next day you will see in every site you will see the ad of like a flights discount. And once you are searching the pizza, next day you will see the lot of ads of pizza. Tomorrow you will also see in the Android phone and iPhone as well, the every like a whatever we are talking. So the social media companies and the big players, they are recording our like everything whatever we are talking, and based on that they are serving the ads. Yeah, in Web3 there will be a token economy. Means, for example, I'm a YouTuber, and whenever I produce like a public any video, or I use that time ads, so I am making money. But if I talk about like a normal people
who are watching my video, they are not getting anything. But in case of Web3, there will be a like a public network, so they will get also rewards because they are also consuming time on my content. So this will be a like a Web3 will be a very big thing in upcoming time, and that's why the Microsoft and Google also moving on the this one token economy, and they are also going moving on the blockchain world. And Facebook has already changed the name. I hope you have see there like you have shown there this one web metaverse. So Facebook new name is Meta, because they are also working on the one space. Right now we are interacting through the internet, but right now look and feel is just like a we are just doing some meeting on the like a some third party, some software. But in case of metaverse, we will feel this one, because you will sit some like a, and recently in the India as well, one marriage happened on the metaverse. So there like a we can touch, we can feel, we can look, and there like a the feeling will be like a very different, because we will work in the one space where will be a like a that will be a like a, in Hindi I use this term, internet के ऊपर की दुनिया. So बिल्कुल वहां पर क्या है कि सब कुछ अलग ही मतलब लेवल की चीजें होंगी वहां पर. जैसे अभी मैरिज हुई है तो कनाट प्लेस का उन्होंने पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, पूरा कनाट प्लेस बनाया हुआ है उसके ऊपर, और पूरा सीपी का वहां पर एक मैरिज होम बनाया हुआ है, वहां पर जाके उन कपल्स ने शादी करी अभी. सो इस न्यूज को आप सर्च करना गूगल में, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. So in Web3 we are working like a there will not be any intermediates. So जो जिनको शादी में जाना था वो गए वहां पर और उन्होंने क्या कि इंटरेक्शन किया अपना, बट वहां पर क्या कि कोई थर्ड पार्टी का कोई डेटा शेयर नहीं हुआ. So this is how the Web3 and metaverse will work. So I'm so see, so there will be also some devices like this. So with the help of these devices we will feel like you are sitting here in front of me in the like in Microsoft meeting, Microsoft Teams. We do the meeting and we do the video conference call. So video conference call like we feel okay you are sitting in India, you are sitting like somewhere else, but and in background your home pic is coming or whatever the in background. But in metaverse there will be a certain office. For example, right now your CA, your team is working, one accountant is working different place and one accountant is working different place, and your one employee is working different place, and that will be connect through metaverse, and there will be one office and they will sit on the like in front of like each other. So it this will be a, like a virtual reality, or this is happening very soon. So that's all. I think now we can move to in QA session, or if you want to like highlight some like a want to repeat or some crypto discussion and all those, that I can go ahead on that part. थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र जी. और थोड़ा डिटेल में बताइए कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें कुछ दे वांट टू अर्न सम मनी, हाउ दे कैन गो अबाउट इट, और इसमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए ताकि कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो, तो लॉस के क्या चांसेस हैं, ये सब भी आप बताइए थोड़ा सा. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली अभी तक जो मैंने बात करी थी दिस इज जस्ट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब भी हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं, तो उसके पहले की उसके बीच की हमें टेक्नोलॉजी समझना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, देन वी शुड अंडरस्टैंड लाइक हाउ स्टॉक मार्केट विल वर्क and how it will be volatile and where they will invest our money. So this is just like a overview of the blockchain technology, and why blockchain like this Bitcoin is like a Bitcoin, no country can ban this one. So because generally आपने अभी सुना होगा रिसेंट में मोदी जी ने कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे ही ये बैन हो सकता है, इसको कोई बैन ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास में अभी सबसे बड़े दो चैलेंज है. पहला चैलेंज है कि इसको रेगुलेट करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा. इसको अगर बैन करें तो बैन इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दैट कैन नॉट बी ट्रैक, और एक कंट्री इसको बैन कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है और ये नेटवर्क ऐसा है पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है. सो अभी यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट वाइज बात करें या फिर हम क्रिप्टो मार्केट वाइज बात करें, तो अभी आज के टाइम में क्या है कि क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि हमें दो तीन चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए. जैसे हम कहते हैं यहाँ पर वर्चुअल मार्केट, दिस इज वर्चुअल. यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से हाइप के ऊपर हो रहा है.
मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट हो रही है कि हाँ बिटकॉइन ले लो और सब बिटकॉइन ले रहे हैं फिर उसके चक्कर। और उसके अंदर क्या होता है कि करेक्शन भी आता है। तो बिटकॉइन के अंदर कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, जैसे ऑल्ट कॉइन है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉइन है जो हर साल आते हैं और जिनका कोई यूज केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन हैव लाइक 21 मिलियन सप्लाई। अगर हम बिटकॉइन वाइज देखें तो उसके हमें लिमिटेड सप्लाई है और उसके यूजर्स बहुत ज्यादा है। बट अगर आज मैं भी अपना कॉइन लॉन्च कर सकता हूँ, अब उसको क्या लोग बाय करेंगे और बाद में क्या होगा, मैं उसको सेल करके निकल जाऊंगा। तो हमें जब भी हम किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी कॉइन को रिसर्च कर रहे हैं तो हमें 4-5 पॉइंट्स हमें जरूर ध्यान रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट है उस कॉइन की फंडामेंटल रिसर्च, कि वो कॉइन किस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर रहा है। जैसे अभी एक कॉइन है माना क्या है कि वो कॉइन मेटावर्स के ऊपर वो कुछ चीजें बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कोई एक कॉइन है फाइल, तो ये क्या है कि फाइलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी एक इंडिया का कॉइन है पॉलीगन मैटिक, उन्होंने क्या है कि गवर्नमेंट के साथ में कई सारे काम किए हैं, इन्फोसिस के साथ में वो काम कर रहे हैं, और जो कोविड वाले सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, मैटिक नेटवर्क के ऊपर उन्होंने डाले हैं। सो उस तो कॉइन का पुष्पेंद्र जी जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, तो इसमें भी कुछ इस टाइप के कंसल्टेंट है क्या जो आपके भी आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ ऐसा भी कोई है क्या? दिस मार्केट इज वेरी वेरी न्यू, और इसमें क्या है कि पोर्टफोलियो मतलब कोई ऐसा इसमें अभी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके लेवल पे जरूर होता है। बट मैं तो यही कहूंगा कि अभी यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है, वहां पर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम डालते हैं, तो वो पूरी तरह से रेगुलेटेड है, वहां हमारा फंड कहीं नहीं जा रहा। बट ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं है। मान के चलो मैंने आपसे आज फंड ले लिया और कल को आपको नहीं दिया, तो इस केस में क्या होगा कि आप कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप अभी तो क्या है कि अगर हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर उनके पास में भी जाएंगे तो वो भी बोलेंगे भाई ये तो इंडिया के अंदर रेगुलेट नहीं है, आपने कहाँ पैसे डाल दिया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर फंडामेंटल किसी भी कॉइन का हमें देखना चाहिए जब भी हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि इसके अंदर 30% 20% जो प्लस माइनस है, इट्स अ वेरी नॉर्मल। सो एंड अदर थिंग्स, इफ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे कुछ कॉइन है, जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, आपका एडीए है। नहीं, अब इसमें ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए मैं कोई बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? मैं उसके पैसे भी दूंगा, कुछ पेमेंट करूंगा, कहाँ से पेमेंट करूंगा? मतलब बैंकिंग चैनल से होगी पेमेंट, वो क्या होगा? यस, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हर कंट्री के अंदर वहाँ के लोकल एक्सचेंजेस है। सो लोकल एक्सचेंज क्या करते हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो वो आपसे आईएनआर लेगा और आपको क्या है कि बिटकॉइन देगा। जस्ट लाइक इन पेटीएम, जैसे हम पेटीएम के ऊपर डिपॉजिट करते हैं और हमें क्या है कि वहां पर हमारा अमाउंट शो होने लगता है। सेम यहाँ पर क्या है कि ऐसे इंडिया के बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर क्या है तो कि हम ये वहां जो पर डिपॉजिट। एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? जब रेगुलेटेड ही नहीं है तो फिर एक्सचेंज कौन चलाता है? बेसिकली अभी ये जो जितने भी एक्सचेंज है ये सेल्फ रेगुलेशन है इनकी। इंडिया के अंदर कोई क्रिप्टो का रेगुलेशन है नहीं, तो अभी कोई भी मतलब ऐसा एक्सचेंज नहीं है जो रेगुलेटेड हो, क्योंकि रेगुलेशन ही नहीं है तो रेगुलेट का कोई मतलब नहीं है अभी। ओके, नहीं तो वो एक्सचेंज चला कौन रहा है फिर? इसका मतलब वो भी कोई नहीं वो लोग ही होंगे। नहीं देखो, वहां पर क्या है कि कई सारे एक्सचेंज क्या है कि सिक्योर करके रखते हैं फंड को, और वहां पर उनका थर्ड पार्टी से भी इंश्योरेंस रहता है। तो जैसे हम कॉइन डीसीएक्स की बात करें तो उनका बिटको के साथ में टाई अप है, अगर आपका वहां से बिटकॉइन चोरी हो जाता है तो दे विल गिव यू। एंड सेम यहाँ पर वजीरेक्स है, तो वजीरेक्स के साथ में भी क्या है कि हम वहां पर डायरेक्टली वहां पर क्रिप्टो रख सकते हैं। सो बट अभी कोई ऐसा मतलब जैसे बहुत सारी कंट्री के अंदर क्या है कि वहां पर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन किया हुआ है कि हाँ आप यहाँ पर एक्सचेंज इन एक्सचेंज से आप बाई कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं यूएस के अंदर क्या है कि उन्होंने क्या कि ऐसा अपने यूजर्स को सिक्योर करने के लिए एक ऐसे पैरामीटर बनाए हुए हैं कि वहां पर आप टॉप 20 कॉइन के अंदर ही ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि रिस्क के चांस कम हो जाते हैं। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि हर पर्सन अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है और वो नेक्स्ट बिटकॉइन ही बताता है उसको, ये दिस विल बी नेक्स्ट बिटकॉइन। उसके अंदर बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि मनी एक बार डाला और लॉस हो गया मनी। सो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है कि मेजर कंसर्न है इंडिया के अंदर। और बहुत सारे कॉइन ऐसे चल रहे हैं जो जिनका कोई यूज केस नहीं है, और जब उन कॉइन का कोई यूज केस नहीं है तो लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं और उनको लगता है कि मेरा फ्रेंड भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या मनी लूज कर देते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपको कहीं भी किसी भी क्रिप्टो के अंदर जाना है तो टॉप 10 सिलेक्ट करो उनका। मैं यहाँ पर एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसमें ना साइट ओपन कर लेता हूँ। सो मुझे लगता है कि
काफी अच्छे से उसमें पता चल पाएगा। So this is CoinMarketCap.com. So CoinMarketCap.com is a global site where we can check the all exchanges, all the cryptocurrencies. So here we have on the first number, this is ranking. So in the first, Bitcoin. So Bitcoin current price is this, and 24 hours the 3% up, and the 7 days 6% up, and this is the market cap. So and this is a volume and last 7 days. And second, other than Bitcoin, as I mentioned, we have altcoin. So ये जितने भी coin है यहाँ पर, ये altcoin है। इसके अंदर एक coin और भी है, stable coin. This is called USDT. स्टेबल कॉइन क्या है कि जैसे हम यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, या जैसे हमारे पास में कभी कभी आईएनआर होता है, आईएनआर से हम वहां पर ये डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ये कॉइन बाई कर लेते हैं। सो नाउ वी विल ट्रेड विद अगेंस्ट द यूएसडीटी. सो दिस इज स्टेबल कॉइन. दिस पर्टिकुलर कॉइन प्राइस विल नॉट फ्लक्चुएट. It can be go like a 1.01 or it can be like a 0. Maximum 1% can be plus minus, but not more than that. But in other cryptocurrency, that is like a volatile, but this is just like our stable coin. So same we have this one stable coin USDT, and हालांकि ये क्वेश्चन अगला है, गौरव जी इसको डील करेंगे, लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट कह रही है भाई हम टैक्स लगाने की सोच रहे हैं इस पर, तो कैसे लगाएंगे टैक्स? वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी उनको कि भाई इस बंदे ने इतना डील किया, इसमें अर्निंग किया नहीं किया? सो बेसिकली अभी क्या है कि जो हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? जैसे देखो अगर कोई एक मिनट, कोई आदमी अगर इसमें डील करना चाहता है तो क्या उसमें केवाईसी नॉर्म्स होते हैं कि भाई ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी? किस तरह से आइडेंटिफाई होता है? बिल्कुल, जैसे क्या है कि अभी जो भी आप जहां भी इंडियन एक्सचेंज के अंदर आप आईएनआर डिपॉजिट करते हो, तो यू हैव टू डू देयर आल्सो केवाईसी. विदाउट केवाईसी दे विल नॉट एबल टू यू विल नॉट एबल टू बाय बिटकॉइन एंड सेल बिटकॉइन. सो इन केवाईसी तो उसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट लॉस है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो एक्सचेंज ही गवर्नमेंट के साथ में शेयर करें बेस्ड ऑन दी पैन कार्ड नंबर कि ये इस पर्सन का इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है. बट उसके अंदर भी अभी बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट को चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है प्रॉफिट लॉस ट्रैक करना, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी न्यू. सो नहीं तो अभी जो प्रॉफिट या लॉस मिलता है, वो अभी जो प्रॉफिट लॉस मिलता है उसमें हमें मनी टर्म्स में मिल जाते हैं पैसे? मान लीजिए हमने कोई परचेज किया फिर सेल कर दिया, उसमें कुछ हमारी इनकम हो गई, तो वो हमें मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? क्या होगा, एक्यूमुलेट होगी, कैसे होगा? दोबारा एक बार रिपीट करें ना कुछ. मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने 1 लाख रुपए लगाए बिटकॉइन में, ठीक है जी, उसका प्राइस हमारा बढ़ गया, उसका प्राइस हो गया 10 लाख, तो क्या हमें 9 लाख रुपए मिल जाएंगे या उसी की वैल्यू बढ़ जाएगी? कैसे होगा? नहीं, वो आपका क्या है कि जैसे अभी लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. राइट नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव बिटकॉइन आपने बाय किया यहाँ पर या कोई छोटा कॉइन लेते हैं, जैसे ये कॉइन है, एक $1 का कॉइन है, आपने ये $1 के 100 कॉइन बाय कर लिए. सो टोटल आपका 100 हुआ और इस कॉइन का प्राइस पहुंच जाता है $10. ठीक है. सो आपका यहाँ पर टोटल हो गया आपका $1000. सो जब इस कॉइन का यहाँ पर प्राइस पहुंच गया 10,000, तो आपका 1000 हो गया, तो आप उसको 1000 को आप विड्रॉल कर सकते हो. वो आपका क्या है कि कॉइन की वैल्यू बढ़ी, और कॉइन की वैल्यू की वजह से क्या कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम जब आप उसको सेल करोगे, अभी बाय करने आए तो आपने 1 का बाय किया, जब सेल करने गए आपको ये 10 का आपका सेल हुआ. दिस इज जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट. ओके. तो हम सारा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं या कोई लिमिटेशन है कि भाई इतना ही विड्रॉ कर सकते हो आप? ऐसा नहीं है. So there is like a you can say like a limit of like a 500 rupees or 1000, बट आप ये समझ लो कि वो तो एक ऐसी लिमिट उन्होंने लगा रखी है कि लोग यहाँ पर 10, 50 रुपीज, 100 रुपीज विड्रॉल ना करें. तो ऐसी कुछ लिमिट हो सकती है, बट वैसी कोई लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दिस इज योर मनी. ओके. सो बेसिकली यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है कि आपका कॉइन है, अब उस कॉइन को आप कैसे बेच रहे हो और उसको होल्ड कर रहे हो, नहीं बेच रहे हो, वो क्या है कि पूरा आपका जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, सेम उसी की तरह है.
और जब तक चाहें आप उसको जब तक होल्ड कर सकते हैं, जहां भी चाहें आप पूरे वर्ल्ड के अंदर वहां सेल कर सकते हैं। बट हो सकता है जैसे इंडिया के अंदर कोई सेल करेगा तो सो ही नीड इंडियन एक्सचेंज एज वेल एज KYC. For example, if I am selling something on Malaysia, then I have to like submit the KYC in here in the local exchange. Then I can only get the MYR. तो यदि कुछ लोग बाहर भी अकाउंट खोल लेते हैं, जैसे मैं मलेशिया में सिंगापुर का अकाउंट खोलना चाहूँ, कॉइन डील करने के लिए, तो खुल जाएगा? भारद्वाज जी, रिपीट करेंगे थोड़ा तेज। भारद्वाज जी ये पूछ रहे हैं कि अगर ये कोई मलेशिया में अकाउंट खोलना चाहे इंडिया के बजाय, ये इंडिया के रेजिडेंट है, तो क्या वहां खोल सकते हैं? अकाउंट हम कहीं भी खोल सकते हैं, बट हमें KYC देनी पड़ेगी, वो KYC अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि वहाँ देयर इफ यू विल सबमिट द इंडियन लाइक आधार कार्ड और इंडियन पासपोर्ट को, तो दे मे नॉट अलाउ, क्योंकि आप और फिर आपके पास में जो अकाउंट होगा वो आपने वहां यहाँ पर अकाउंट बना भी लिया, अगर आप उसको विड्रॉल करोगे सो विड्रॉल तो वो आपका यहाँ के अकाउंट के अंदर आएगा, लोकल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ का अकाउंट नहीं होगा तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। ओके, हाँ, बट यू कैन होल्ड दैट अमाउंट। लेट्स से एक एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस, ये टॉप वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, यहाँ पर हम जाके हम क्रिप्टो खाली वहां पर हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के लिए हम यहाँ से ले जाते हैं इंडियन एक्सचेंज से, वहां ट्रेड करते हैं, जब बढ़ जाता है हमारा हम इंडियन एक्सचेंज के ऊपर वापस ले आते हैं। बट वहां पर हम विड्रॉल INR में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ऑप्शन है वहां पर P2P का, लेकिन दैट इज रिस्की, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल उसमें आ जाता है, फिर फेमा रेगुलेशन एंड उन सब के अंदर चीजें आती हैं, सो दैट इज लाइक अ मोर टेरेबल। हेलो सर, ये TRC और ERC क्या होता है? सो TRC ERC बेसिकली, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर एक ब्लॉकचेन का एग्जांपल दिया, सो ब्लॉकचेन के क्या है कि नेटवर्क होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ERC की बात करें तो ERC है ये इथेरियम। तो इथेरियम की जो बैकएंड की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब बैकएंड की जो ब्लॉकचेन है वो है यहाँ पर ERC, तो इसको हम इथेरियम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो जो इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर यूज हो रही है यहाँ पर ERC। और ERC के अंदर क्या होता है कि आपका अभी ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये सब वर्ल्ड का सेकंड नंबर का कॉइन है और इसका जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा है। तो जो इसके अंदर जो नेटवर्क के ऊपर आप यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पर माइनिंग के बारे में बताया था, तो ये पैसा क्या है कि माइनर को जाता है जो बीच में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। तो इथेरियम, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन हो गई। अब यहाँ पर TRC का आपने पूछा, TRC के अंदर क्या होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो कम होते हैं, वो एक जस्ट एक अनदर नेटवर्क है। जैसे हम यहाँ पर नेटवर्क को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कभी हम क्या है कि किसी वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कभी दूसरे वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो दोनों के जो बीच का जो ट्रांजैक्शन है या दोनों के बीच का जो नेटवर्क है वो अलग है, और उस नेटवर्क की वजह से ट्रांजैक्शन एक पहले नेटवर्क के अंदर फास्ट हो सकता है, दूसरे के नेटवर्क के अंदर स्लो हो सकता है। ओके सर, एक चीज और बताइए कि सपोज हमने कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदी, जैसे आप कहते हैं बाइनेंस में ट्रांसफर कर दिया हमने जो US में है, तो कोई फेमा के प्रोविजन भी लगते हैं, सिंस मनी हैज गॉन आउट? सी अभी क्या है कि क्रिप्टो के अंदर कोई एज सच कोई रेगुलेशन नहीं है, और आप वहां पर क्या है कि मनी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने क्या है कि आप उसको कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबल है, और इसके अंदर अगर आप इंडिया के अंदर भी ट्रेड कर रहे हो तो वो इंटरनली चीजें ग्लोबली हो रही हैं, क्योंकि आप ग्लोबल करेंसी के अंदर। और बिटकॉइन का कोई जो फाउंडर था, जैसे मैंने सतोशी नाकामोटो के बारे में बताया, वहां पर क्या है कि अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि सतोशी नाकामोटो ही यहाँ पर फाउंडर है जस्ट। और हो सकता है ये यहाँ पर सैमसंग और यहाँ पर मोटरोला जैसी बड़ी कंपनी भी हो इसके पीछे, और भी कोई हो, अभी तक क्या है कि इसका एक्चुअल किसी को नहीं पता कि किसने बनाया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो रेगुलेशन है, और ये रेगुलेशन वाइज बात करें हम या वैसे भी बात करें लीगल वाली चीजों की, तो बहुत ज्यादा कोई लॉ है ही नहीं, और कोई भी कंट्री इसके ऊपर लॉ भी बनाने में, मतलब बहुत सारी जो मेजर कंट्री है वो लॉ बना रही है अभी इसके ऊपर, और कई सारे जगह इंप्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन ये टाइम लेगा, धीरे धीरे रेगुलेशन आ रहा है। इंटरनेशनल कंसेंसस जब तक नहीं हुआ तब तक लॉ कैसे ऑपरेट करेगा सर? सर कैन यू रिपीट वंस अगेन? इंटरनेशनल कंसेंसस जब तक नहीं बनेगा सभी देशों में, लॉ कैसे ऑपरेट करेगा? सीए सर, आप एक बार इनका क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मुझे भारद्वाज जी ये कह रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल कंसेंट होनी चाहिए, मतलब ऑल दी कंट्रीज शुड कंसेंट, तो तभी कोई लॉ बन पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली
चल रही है ना चीजें। बिल्कुल। अभी जो यहाँ पर अभी मोदी जी ने यहाँ पर चीजें बोली थी, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि पहले इंडिया के अंदर यहाँ पर एक नवंबर के मंथ के अंदर एक बहुत बड़ी फट आई थी, बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि इंडिया प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर रहा है। बट क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही है कि उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। जब कोई तो वो बैन हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडिया के साथ में कुछ दिक्कत आई तो लोग क्या है कि अदर कंट्री स्विच करने लगेंगे, और इसमें क्या है कि इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न बने, अभी बहुत सारे यूनिकॉर्न क्रिप्टो वाले हैं इंडिया के अंदर, डिजिटल वाले हैं, तो ये फॉरेन मूव करने लगेंगे। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ही। और इंडिया बहुत बड़ा लीडर है। अगर हम यहाँ पर टेक वाइज भी देखें ना ब्लॉकचेन को, तो इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। सीबीएसई बोर्ड ने अपना जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की है। अभी और भी बहुत सारी जगह इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन नेटवर्क यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्प्रेड हो रहा है। और किसी भी ब्लॉकचेन को रन करने के लिए वहां पर उसका टोकन चाहिए होता है। अब जब इंडिया के अंदर बैन हो जाएगा तो वो टोकन ही बाय नहीं हो पाएगा, वो टोकन बाय नहीं हो पाएगा तो वो ब्लॉकचेन ही नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड है या ऐसे जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनको क्या है कि यहाँ पर इस नेटवर्क को ही बंद करना पड़ेगा। और नेटवर्क बंद होगा तो इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर रेगुलेशन ही एक ऐसा जरिया है जहां पर एक पर्टिकुलर टैक्स लगाया जाए और प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पर इसको बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एक इंस्ट्रक्शन कि आप इन्हीं कॉइन्स के अंदर कर सकते हो या आप ऐसे कॉइन की कर सकते हो जो उनको क्या है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं, वही सब कुछ पॉसिबल है। अदरवाइज क्या है कि कोई डायरेक्ट बैन, ब्लैंकेट बैन, वो सब तो इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीजें बनेंगी, क्योंकि कोई पर्सन ने इंडिया में बाय किया और इसको आप हार्डवेयर पेन ड्राइव में भी रख सकते हो कि आप जैसे मतलब पेन ड्राइव इन द सेंस कि इसका एक अलग आता है हार्डवेयर वॉलेट जिसको हम लेजर नैनो बोलते हैं। तो उसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो रख के आप कहीं भी दूसरी कंट्री भी जा सकते हो। इनफैक्ट आप अपने फोन के अंदर तो रख ही सकते हो, इसके साथ में आप पेपर पे भी रख सकते हो, पेपर पे प्रिंट करके भी रख सकते हो अपनी। और उस प्रिंट को आप जब भी यूज करना चाहो जब यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक ए क्यूआर कोड। भारद्वाज जी का क्वेश्चन है, अगर कोई की चेन खो जाता है तो फिर उसका क्या, जैसे फॉरगेट पासवर्ड होता है ईमेल में, तो ऐसे कैसे होगा? हाँ, यहाँ पर क्या है कि कोई मिडिल मैन नहीं है। अब कोई ओके। मिडिल मैन ही नहीं है तो फिर यहाँ पर तो कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर है, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर वज्रएक्स है, तो वो क्या है कि एक्सचेंज के पास में क्या है, एक्सचेंज अपने पास में डेटा रखते हैं। बट अगर हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसे वॉलेट की जहां पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर अगर एक बार हमारा पासवर्ड वो प्राइवेट की गई तो फिर वहां पर सब कुछ गया। एक यहाँ पर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आप गूगल करोगे ये वाली स्टोरी। एक पर्सन है, उसने क्या किया, 2013 के ऊपर 2014 के अंदर उसने बिटकॉइन बाय किए और बाय करके उसने एक वॉलेट के अंदर रख दिए और उसका वॉलेट खो गया। अभी उसने रियलाइज किया उसकी वैल्यू बिलियंस डॉलर है, बिलियंस में है उसकी वैल्यू। अब वो क्या है कि जो जहां वो फेंका था उसने, जो उसका कूड़ा वगैरह ये जहां डालता है, वो वहां पर खुदाई करवा रहा है। गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है कि 10 साल पुराना मुझे यहाँ पर खोद लेने दो, मुझे यहाँ पर फाइंड करने दो। आप उसको ये यूट्यूब पे देखना, बड़ी लंबी स्टोरी है। तो वहां की गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही। तो वो सर्च करना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि 1 बिलियन। तो मैं एक और ऐसा पर्सन है जो 2014 में उसने ट्वीट किया था कि मैंने बिटकॉइन यहाँ पर $50 का बेच दिया, अगर मैं इसको $60 के ऊपर बेचता तो आज मैं यहाँ पर मिलियनर होता, मतलब वो $80 के ऊपर बेचता तो मिलियनर होता। तो उसने फिर अभी यहाँ पर 2020 के अंदर भी ट्वीट किया, तो वहां पर हमने लिखा है कि आर यू स्टिल अलाइव, तो उसने बोला यस आई एम अलाइव बट इनसाइड डेड। मैं अंदर से खत्म हो चुका हूँ। क्योंकि आज के टाइम में जब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास में लाखों बिटकॉइन हैं और मैंने उस टाइम ये सोच के बेच दिया कि चलो $0.5 का। तो बहुत सारी स्टोरी है। एक पिज्जा वाली स्टोरी है जिसके अंदर उसने एक पिज्जा बाय किया 10,000 बिटकॉइन देकर। और आज के टाइम में 10,000 बिटकॉइन का मल्टीप्लाई करोगे आप 30 लाख से, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। वो 1-2 सिटी खरीद सकता है। तो आई थिंक मेरी साइड से यहाँ पर सेशन अब यहाँ पर जो सीए गौरव गुप्ता जी हैं वो यहाँ पर गौरव गर्ग जी हैं। टैक्सेशन। आप प्लीज कंटिन्यू करिए, तब तक मैं जरा गौरव जी को कांटेक्ट करता हूँ।
हाँ, सो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, जब भी क्रिप्टो के अंदर हमें यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना है, इन्वेस्ट वाइज, तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का प्लान करें और वहां पर उतना ही मनी डालें जितना हम लूज करने के लिए रेडी हैं। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में अगर हमारी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज है, और अगर हम वहां से उसमें 2000 रुपीज डाल देते हैं, डाल के भूल जाते हैं, और हम वहां पर ये रिस्क लेते हैं कि ठीक है 2000 में से हो सकता है कि चलो 1000 हो गया, तो मुझे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, मेरी लाइफ पे, पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, वो कहीं तक सही है। बट ऐसा नहीं कि क्रिप्टो के अंदर जो भी है डाल दो, बस रातों रात डबल बन जाएगा, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सो ये थोड़ा सा हमें माइंडसेट यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये हो चुका है क्रिप्टो के लिए, आज पैसा डालो यहाँ पर 25 दिन में पैसा डबल। सो क्रिप्टो इज नॉट लाइक ए ओवरराइट क्विक मनी मेकिंग स्कीम। सो हमें इसकी टेक्नोलॉजी वाइज अभी हमने यहाँ पर समझा इस चीज को। एक पुष्पेंद्र जी, एक और सवाल था इसमें, एक गगन गुप्ता जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी ट्रांसफर कॉइन फ्रॉम वजीरेक्स टू बाइनेंस, ये क्या है? सो बेसिकली क्या है कि जो वजीरेक्स है वो ना बाइनेंस ने बाय कर लिया है, मतलब बाइनेंस का ही है अब वजीरेक्स, और बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है। अब उन्होंने क्या है कि जब वो एक दूसरे के यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड है, तो उन्होंने क्या हुआ है वहां पर डायरेक्ट लिंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्या है कि वहां पर लिंक कर सकते हो वॉलेट, और आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। सो वहां पर एक आप जाओगे, वहां पर इंटरनल ट्रांसफर का ऑप्शन है, बाय विच यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर इन जीरो फी। अब पुष्पेंद्र जी, अगर मान लो किसी ने बिटकॉइन खरीदना हो तो क्या है, कोई वेबसाइट है, कहाँ पर जाना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है? यही एक्सचेंज है जैसे वजीरेक्स, इन्होंने ये वजीरेक्स.com, coindcx.com, ये एक्सचेंज है, एक तरीके से आप कह सकते हो वेबसाइट एक्सचेंज। ओके ओके। राघव धवन जी पूछ रहे हैं, इन व्हाट फॉर्म एंड वेयर आर ब्लॉकचेन डेटाबेसेस मेंटेन्ड? तो डेटाबेसेस कहाँ रहते हैं? बेसिकली डेटाबेसेस के बारे में जैसे अभी मैंने यहाँ पर आई थिंक इन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो पीपीटी के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो इसका डेटाबेस है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी ओन नहीं करती। अगर आज आप बिटकॉइन आपने बाय किया और आपने डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर बाय किया, तो जितना भी सारा डेटा है वो आपके पास भी पहुंच जाएगा। तो इसका जो डेटा है वो हर पर्सन के पास में है, पूरा नेटवर्क के पास में है। हर जो इसका नेटवर्क है वो ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आज यहाँ पर जितने भी पर्सन है, अगर मेरे पास में कोई एंट्री है किसी भी चीज की, तो वो सबके पास में सिंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर उसको ऑल्टर करने की कोशिश करोगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा नेटवर्क आपको पकड़ लेगा, क्योंकि आपने इसको मॉडिफाई किया है। और यही चीज है जिसकी वजह से क्या कि ये टेक्नोलॉजी सिक्योर है। जो इसका डेटा है वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर, कोई लोकेशन के ऊपर यहाँ पर स्टोर नहीं होता। इसका डेटा क्या है कि हर पर्सन के पास में जो भी इस नेटवर्क में जुड़ता जाएगा, उसी को क्या है कि पूरी कॉपी मिल जाएगी डेटा की, फिर लो भाई आप लोग। और यहाँ पर अगर 100% है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, धीरे धीरे ये नेटवर्क बड़ा होता चला जाएगा। और यही रीजन है कि इसको क्या कि बैन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहाँ डेटा फाइंड करेगी। जैसे आज ट्विटर के ऊपर गवर्नमेंट को कोई कुछ भी करना है, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनके ऑफिस जा सकती है, उनके डेटा सर्वर कहाँ रखे हैं सब कुछ पकड़ सकती है। बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क ही ऐसा है, पूरा ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये पूरा इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है। इसको अगर मैनिपुलेट भी करना है, तो पूरे वर्ल्ड का जितना ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसका 51% एक साइड होना चाहिए, एक साइड एग्री होना चाहिए, तो ही पॉसिबल है, और वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक और क्वेश्चन है गगन गुप्ता जी का, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ माइनिंग, इज इट प्रॉफिटेबल बिजनेस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव? Actually, in 2017, 2016, the mining was like a very good and profitable. But if I talk about like in this year, so right now electricity cost is very high as well, and the mining equipment also high. जब लास्ट टाइम यहाँ पर चाइना से जो पहले हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजें होती थी और उसकी कॉस्टिंग बड़ी मैनेजेबल थी, आज के टाइम में उनके प्राइस डबल हो चुके हैं। तो जो माइनिंग है वो अब इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही है, और साथ के साथ जो माइनिंग है उसके रिवॉर्ड्स भी कम हो गए। हर 4 ईयर के बाद में यहाँ पर रिवॉर्ड्स कम होते हैं, तो बड़ा प्रॉफिटेबल नहीं है माइनिंग, अनटिल अनलेस कि आप वहां पर जो अपना पूरा माइनिंग हब है और पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर नहीं बनाते। ओके, सो अगेन थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र सिंह जी। अब गौरव गर्ग जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, वी वेलकम हिम इन आवर फोरम। अभी तक हमने रेगुलेटरी, ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स देखे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के। नेक्स्ट पोर्शन इज टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इंडिया गवर्नमेंट क्या सोच रही है? पीछे से ये भी न्यूज आई थी कि भाई कुछ इस बजट में भी कुछ आ सकता है रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी।
तो उसके लिए गौरव गर्ग जी ने एक पेपर भी सर्कुलेट किया था ग्रुप में. He has written a blog also on this taxation of cryptocurrency. गौरव गर्ग जी हमारे अपने ही मेंबर हैं. सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक कि दोबारा जीत करके आए हैं रीजनल काउंसिल में, और हमारे साथ पहले भी आते रहे हैं हमारे स्टडी सर्कल वाले प्रोग्राम में भी. तो विद दिस आई विल रिक्वेस्ट present here. Okay, sir. So let me continue. So basically, the topic is taxation of cryptocurrency, and we can extend it to taxation of not only cryptocurrency but also crypto asset. Basically, अभी आप सबने cryptocurrencies या blockchain technology के बारे में सुना, and I think now you must have been fair idea about what blockchain technology or what DLT technology is. So the question comes, what is cryptocurrency? And we are discussing from tax perspective, तो हम tax perspective से ही discuss करेंगे. Cryptocurrency, दोस्तों क्या आप cryptocurrency को छू सकते हो? Can you touch cryptocurrency? The answer is no. We cannot touch cryptocurrency. We cannot put cryptocurrency in our pocket. क्या हम उसको अपनी pocket में डाल सकते हैं? Answer is no. We cannot put cryptocurrency in our pocket. Which means कि cryptocurrency is not tangible. Then who issued the cryptocurrency? Is RBI, Reserve Bank of India, issuing the cryptocurrency? The answer is no. It is not the Reserve Bank of India which is issuing the cryptocurrency. Then does it mean that now if Reserve Bank of India is not issuing the cryptocurrency, is it a legal tender? The answer is no, it is not a legal tender. Because India may, as far as India is concerned, the law, the regulation allows only Reserve Bank of India to issue coins and notes which can be used for commercial transactions. And nobody in India except Reserve Bank of India is allowed to issue notes or coins which we call as currency. So certainly from India perspective, cryptocurrency is not a currency, is not a legal tender. If it is not a legal tender, then what it is? Is it a security? Are we getting rights in some company by holding a Bitcoin or by holding a Ethereum or by holding a Cardano or any other crypto coin? The answer is no. And basically, अगर आप देखें, when my fellow speaker was discussing about the mining of cryptocurrency, if I say in a very raw form, then cryptocurrency is like a software, is like a coding, is rather a code, which means it is, from a tax perspective, we can say it is a software or it is an intangible asset. So now the taxation, when it comes to the income tax, we need to see it from the perspective of an intangible asset. Why is it? Because certainly it has got certain market value, and that's why we are calling it as an asset. So from income tax perspective, it is an intangible asset. गुप्ता जी, वो हमारे पुराने वाले स्पीकर अभी हैं या वो he has left the discussion? नहीं, he is very much here. He has just muted himself, but he is here. So I have one question for him, which I probably अगर उन्होंने discuss करा हो. Okay, तो मेरा okay. क्वेश्चन ये है कि सर अगर आप बता पाए कि where the cryptocurrency is stored. मान लीजिए बिटकॉइन में आज कोई बिटकॉइन होल्ड करता हूं. इंडिया there are many
investors who hold Bitcoin. So where Bitcoin resides? Is it reside in my mobile? Is it reside in the server of an exchange like WazirX or any other, exchanging platform in India, maybe Vault, or it resides somewhere else outside India? पुष्पेंद्र जी? यस, सो बेसिकली मैंने मिड में अभी ज्वाइन किया, दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं आपका क्वेश्चन में समझ पाया हूँ. सो बेसिकली जो आपका बिटकॉइन है, जैसे आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आपने बाय किया हुआ है, तो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर क्या होगा कि वो जो आपका वॉलेट है वो आपकी नेटवर्क के ऊपर एंट्री हो जाएगी, बट उसका जो बिटकॉइन वो एक्चुअल कहां पर है, वो क्या है कि पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर है, उसका मतलब कोई लोकेशन नहीं है. और अगर आपने यहाँ पर वज्रेक्स के ऊपर बाय किया हुआ है, तो वज्रेक्स क्या करता है, जैसे उनका क्या कि इंटरनल वॉलेट होता है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट. तो हॉट वॉलेट वो वॉलेट होता है जैसे जिसको वो इंटरनेट से कनेक्ट करके रखते हैं, और जो भी हम वहां पर विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो पहले वो हॉट वॉलेट के अंदर जाते हैं, और हॉट वॉलेट अगर कोई हैक हो जाए या कुछ भी हो, इसलिए क्या है कि हॉट वॉलेट को वो एक लिमिटेड अमाउंट वहां पर रखते हैं उसके अंदर. उसके पीछे एक बैकग्राउंड में वो चलाते हैं कोल्ड वॉलेट. और कोल्ड वॉलेट जैसे आपने एक पर्सनल अपना इंडिविजुअल एक वॉलेट क्रिएट किया, सेम इसी तरीके का होता है, लेकिन हम सबकी वहां पर क्रिप्टो वो एक्सचेंज के अंदर, उसी के अंदर क्रिप्टो रहती है. तो वो अगर एक्सचेंज से बाय किया तो एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर है, और अगर आपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट से बाय किया है तो वो आपका नेटवर्क के ऊपर है वो पूरा. ओके, सो बेसिकली एक नॉर्मल मैन के लिए क्रिप्टो करेंसी जो मैंने खरीदी वो कहाँ पे होगी, तो वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेज है. एंड देयर आर सम लिटरेचर्स व्हिच आई रेड, दे से कि बेसिकली एज फार एज योर वॉलेट इज कंसर्न, जो आपका ऑनलाइन वॉलेट है जहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि हाँ मेरे इतने क्रिप्टो कॉइन्स हैं, बेसिकली वो तो एड्रेस बता रहा है. ठीक है, वो हैशटैग के थ्रू एक जनरेट हो जाएगा और पता लगेगा कि हाँ आप इतने कॉइन्स होल्ड करते हो, but still in a physical form they are not in your crypto wallet. They are crypto wallet only, जैसे उन्होंने कहा एक लेजर में एंट्री की तरह हो जाएगा. वो एक्चुअली में कहाँ पे स्टोर्ड है, वो कौन से वॉलेट में स्टोर्ड है, दिस इज ऑल ग्रे एरिया, ऑल कंफ्यूजिंग एरिया. सो क्वेश्चन उठता है, इज इट अ फॉरेन एसेट इन विच आई हैव इन्वेस्टेड? So that's why budget mein everyone is saying that certain clarification needs to become on the taxation aspect of cryptocurrency. But without going into too much detail of the confusion, let me try to come to a simple example through which we can all understand the taxation of cryptocurrency under the current framework of law. See, the starting point of cryptocurrency is the mining, and mining is what? Mining is a validation. जब पुष्पेंद्र जी बता रहे थे ब्लॉक्स होते हैं और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको वैलिडेट करते हैं, वो बहुत बड़ा कोई कंप्यूटेशनल फॉर्मूला होता है 64 बिट का, उसमें हैशटैग लगता है, एंड देन द वन हु सॉल्व्स इट एट द बेस्ट, एट द अर्लीस्ट, द माइनर, जिसको माइनर कहते हैं, दैट माइनर एज अ रिवॉर्ड फॉर वैलिडेटिंग अ ट्रांजैक्शन गेट्स अ क्रिप्टोकरेंसी. सो इन वन वे miners are somewhat like auditors who validate the transaction, and because they are validating the transaction as a fee, they get a crypto coin. अब जो blockchain technology है, there are, जैसे हमने different coins की बात करी, bitcoins, Ethereum, Cardano and Dogecoin. So they are basically based on different technologies. Within blockchain there are different type of technologies or different type of DLT ledgers, और जिस DLT ledger पे transaction हो रही है, उस DLT ledger का एक अपना coin generate होता है, and that coin may be the Bitcoin, that coin may be the Cardano, that coin may be the Dogecoin, that coin may be Ethereum. And ये जो coin generates होते हैं, इनके actually कोई fundamental value नहीं होती. Generally they carry a technical or a market value because they do not have any backing of asset. And then there are cryptocurrencies, US dollar, Ethereum, UDT, which is backed by the equal amount of US dollar. So it's a private
क्रिप्टो करेंसी wherein जब भी वो एक नया क्रिप्टो कॉइन जनरेट करते हैं, the equivalent amount of the dollars get deposited in the bank account. So उसमें जो backing होती है वो डॉलर की होती है. So you will find UDT का जो वैल्यू है, it is generally unequal to the value of US dollar. तो वैल्यू ऑफ US डॉलर अगर अप जाएगा तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, अगर US डॉलर का वैल्यू नीचे जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. Now coming back to mining. Now when you are doing a mining, so a normal man like you and me generally are not involved in mining. Mining are the hub of mining, if I talk about, is primarily the Russia, Kazakhstan, and US also. But India mein mining is not very popular still. So the question comes, does a mining, जब mining हमने करी and we are running a crypto coin, let's say if client comes to you कि boss, I have got 5 crypto coins, and आप उससे पूछते हो कि how you own this crypto coin, so he says मैंने mining करी, I am a miner, and based on my mining I got 5 crypto coins. So question comes whether ये जो crypto coin उसने earn करे, are they taxable or not? So there are two school of thoughts on this. One school of thought is like a US, US says because it is a service fee, you are validating a transaction, and because of the validation of transaction you are earning an income in the form of Bitcoin. So it should be seen as a service fee, and it should, if it is a service fee, it is coming off because of your professional skill set or because of the setup which you have maintained. So it is nothing but a business income, and it should be taxed as a business income. However, as far as India is concerned, India primarily currently the consultants follow another school of thought, which they call it as a self-generated asset. And being it is a self-generated asset, we cannot have the valuation of self-generated asset. So in India, if I talk about, most of the tax consultants are following the Supreme Court judgment in case of B. Srinivas Shetty, wherein it said there cannot be taxation in case of self-generated asset. I think whether the income generated because of the mining should be taxable or not, we need clarity on this from the budget provisions. And if yes, if it is taxable, then what should be the valuation rule? Apparently it would going to be the market value, but market value on the date of valuation, on the date of mining, at the closing of the year, needs to come up from the budget. But currently, as I told you, most of the tax consultants in India are going by a logic that it is a self-generated asset and hence should not be taxed. Now, once the mining is done, generally the other set of transactions would involve, या तो आपको cryptocurrency को buy करना पड़ेगा, या you will get it as a reward for some of your action. अब या आप let's say India में हो and you are issuing a share, and in refund instead of money you are getting a cryptocurrency. So if you have not done the mining, how you will become the owner of a cryptocurrency is by doing some action. कुछ ना कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा तभी cryptocurrency आएगी. कहाँ पे आएगी? We know that we need to have one crypto wallet. Crypto wallet में ही cryptocurrency reflect होती है. So that can be created, or there are number of exchanges in India जहाँ पे आप हल्की सी KYC करके अपना एक crypto wallet बना सकते हैं. अब let's say the first case, आपने crypto coin खरीदा पैसे देके, तो certainly इस point पे तो कोई taxation आएगा नहीं, because you are acquiring the asset. Acquisition of asset पे तो कोई taxability आती नहीं है. Second would be, let's say आप एम्प्लॉई हैं या आप प्रोफेशनल है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम डिजाइनर्स हो सकते हैं, हम प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, एंड वी आर डूइंग सम सर्विस. हमने कोई सर्विस दी किसी फॉरेनर को, हम उसका कोई मेंशन बना रहे हैं, एंड ही सेज कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द मनी, आई विल गिव यू द क्रिप्टो कॉइंस. So now when he is giving us the crypto coins, this is nothing but a service fee. और जो मेरी प्रोफेशनल इनकम है उसकी it would be taxed as a professional income at the time of receipt, और इसकी fair market value I can take it from the exchanges. So ये transaction मेरी taxable हो जाएगी.
And if I am getting it as an employee, so it would become my part of my salary. Again, we'll go to the fair market value principle. We'll see what is the fair market value of the coins transferred to my account. हम उसको उस हिसाब से टैक्स कर लेंगे. Now let's say you have bought, we said अगर आपने खरीदा तो certainly कोई taxation है नहीं. Now if you are transferring crypto coins, crypto asset, crypto coins, Bitcoin or any other coin, then certainly taxation can come. So उस case में we have broadly two sections. One is two categorization. One is we will say it is a capital gain. So if you are acting as an investor, आपकी होल्डिंग का पीरियड ज्यादा है इन जनरल और आप रेगुलरली उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं, then it will be categorized as your capital gain. And in case of crypto coins, जो आपका short term holding होगा वो less than 3 years का होगा, and if it is more than 3 years then it would be a long term capital gain and it would be taxed accordingly. Whereas if you are dealing in crypto assets, crypto coins as a trader, then it would become your business income, and whatever the capital gain or loss which you are generating on a crypto coins, it would be taxed as a business income. So this was in general on the crypto coins. I think nothing specific, but I think more interesting aspect of crypto is the crypto asset. So crypto asset है क्या, जैसे आपने सुना होगा NFT आ रहे हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं. So NFT is non-fungible token, whereas cryptocurrency is a fungible token. Means NFT is like a contract. It's a virtual contract which would be separate and unique in comparison to all other contracts. So आजकल NFT में भी transactions बहुत increase हो गए. You may find lot of youngsters specifically they are investing a huge amount on NFT. और वो NFT में क्या करते हैं, कोई स्टिकर खरीद लेते हैं, कोई पेंटिंग, कोई आर्ट खरीद लेते हैं, कोई म्यूजिक की क्लिप खरीद लेंगे. एंड आई थिंक ट्विटर में द वन हु ओन द ट्विटर, जब उन्होंने ट्विटर स्टार्ट किया तो इवन ही सोल्ड हिज फर्स्ट ट्वीट, उन्होंने उसका NFT बना दिया और सेल कर दिया. एंड आई अंडरस्टैंड देयर इज अ एक्सचेंज इन इंडिया, वो क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड की थीम्स पे भी उन्होंने NFT बनाई है. जो पुराने मूवीज के पोस्टर्स हैं, दे आर सेलिंग देम एज एन NFT. इवन अमिताभ बच्चन जी ने शहंशाह मूवी में जो जैकेट पहनी थी उसको भी दे आर सेलिंग एज एन NFT. So how to tax NFT, which is a crypto asset? So we need to understand the nature of NFT. आप NFT को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखिए और उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो अंडरलाइंग एसेट है, that would actually is getting transferred from one person to another via NFT. So it's not the NFT which needs to be taxed, it's rather the asset, underlying asset behind NFT which needs the taxation. So if the underlying asset behind NFT is an intangible, let's say some painting or music which is on the digital world, on server or on laptops, then it would be an intangible asset, and any transaction in NFT would be taxed as if you are taxing the intangible asset. But whereas let's say the crypto asset, the underlying crypto asset behind NFT is, let's say, jacket of Amitabh Bachchan, which is a physical good, then I think taxation will happen as if you are transferring a physical commodity or a physical product. The important thing which we need to remember when we are dealing with NFT transaction is, because as I said, it is a contract, and sometimes contracts carry a royalty arrangement, which means कि whenever there, let's say मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन की जैकेट है, हमने उसका NFT बना दिया, which is an online contract, and now I am transferring to Gupta जी, RK गुप्ता जी को मैंने ट्रांसफर करा. RK गुप्ता जी ने NFT बाय कर लिए, उनके पास अमिताभ बच्चन की जैकेट मैंने डिलीवर करा दी. मैंने एक और कंडीशन उसमें कॉन्ट्रैक्ट में इम्बाइब कर रखी है. वो कंडीशन क्या है कि whenever Gupta ji will transfer this NFT to anyone else, I will
get some royalty, maybe 5% or 10%, because क्योंकि digitally NFT transfer होने तो वो contract में आप imbibe कर सकते हो कि जो main owner है, the one who initiated the transaction initially, he will get every detail. So now Gupta ji transfers NFT to Bhardwaj ji. Bhardwaj ji certainly Gupta ji से buy करते हैं, and जब ये transaction होगी between Gupta ji and Bhardwaj ji, I might be getting certain amount as a royalty. So this royalty also needs a taxation. तो आप इसको कैसे रॉयल्टी को टैक्स करोगे? रॉयल्टी इज टैक्स बिजनेस इनकम, तो आप उस पे टीडीएस डिडक्ट करना है नहीं करना, whether the royalty is going to a foreign individual or an Indian guy. I think all those aspects needs to be carefully studied when you are dealing in a transaction of NFT. These kind of issues are not there when you are dealing in cryptocurrency. So apparently, the taxation of cryptocurrency is pretty much easy. We can divide it broadly in two parts. As I said earlier, either it would become your business income if you are a trader or primarily acting as a trader or receiving cryptocurrency in lieu of services performed by you. But whereas if you are a investor in cryptocurrency, it will be taxed as a capital gain. So pretty much simple, which we are doing on a regular basis. How to track a transaction? आप किसी से भी उसके क्रिप्टो वॉलेट की स्टेटमेंट ले सकते हैं, which will have all the details. उसे किस प्राइस पे खरीदा, किस प्राइस पे बेचा. From there you can do the calculation. But when you are dealing in NFTs, I think therein each agreement needs to be studied. इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूँगा. There are different exchanges of NFTs from where you can buy NFT. Now, sometimes I have seen ये जो exchanges होते हैं, they also are some kind of they are based on certain categories. For example, there would be NFT exchange जहाँ पे एक बार ट्रांजैक्शन हो गई तो उसमें कोई रॉयल्टी का चक्कर नहीं होगा. इट वुड बी 1-to-1 ट्रांजैक्शन. आप अल्टीमेट ओनर बन गए, तो यू वांट टू सेल इट, यू कैन सेल इट. बट देयर वुड बी एक्सचेंजेस जहाँ पे यू आर ओनली गेटिंग सर्टेन राइट्स in the NFT or via NFT, and you are not becoming the absolute owner. So what kind of transactions we have entered into NFT that can be understood by visiting to terms of the exchange. Generally, exchange do mention the terms which are part of the NFT. तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है NFT में, which I want to warn all of you. If you have bought NFT, it does not mean that you have owned the original asset. It may very well happen that एक asset की 5 NFT create हो जाए. So if I have got one Shahenshah jacket of Amitabh Bachchan, I can very well deceive all of you guys and create 50 NFT tokens of the same Amitabh Bachchan jacket, और मैं उन 50 लोगों को सेम जैकेट सेल कर सकता हूँ और मैं आपसे क्रिप्टो में पैसे लेके भाग सकता हूँ. तो when you are dealing in NFT, be sure that you are dealing in right exchange. अगर आपका exchange अच्छा है तो generally exchange take cares of all this stuff. Exchange in NFT is very, very important marketplace, and if the credibility of exchange is high, generally you would be entering into safe NFT transaction. But if credibility of exchange is not good, you may be entering into a transaction which is nothing but a fraud. So I think now we can have questions. Gupta ji, I'm done with my part of taxation of cryptocurrency or crypto assets. Thank you very much, Gaurav Garg ji and Pushpendra Singh ji. हेलो. हाँ जी. तो किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्लीज, रिगार्डिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स या टैक्सेशन एस्पेक्ट पर. किसी भी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. वैसे तो पुष्पेंद्र जी ने तो अपने क्वेश्चन आंसर पहले ही टेकअप कर लिए थे, तो और आपने सर अवेलेबल फॉर आंसरिंग, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन सर.
It was a wonderful session. We are highly thankful to both the speakers for sharing their valuable ideas on this cryptocurrency and blockchain concept. I am highly thankful to both of you for sparing your valuable time for guiding our members. There was attendance was a little thin, but even then I can see 50% are currently present, and in between the strength was around 75-80. So, with the permission of all the speakers and Gupta ji, I would like to end the meeting formally. बिल्कुल सर, बिल्कुल. Thank you both the speakers, पुष्पेंद्र सिंह जी and गौरव गर्ग जी. It was really a wonderful session. Listening to both of you, बहुत ही बढ़िया था. Thank you, sir. Thank you, sir. So, Thank you. Thank you, sir. मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा. मलिक जी अपना फेस दिखा